एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं विद अवर न्यू वीडियो सीरीज, जिसमें हम हर टॉपिक को वीडियो बाय वीडियो कवर अप करेंगे। सो इफ यू वांट टू बिल्ड अप योर प्रिपरेशन फॉर JEE नीट इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर, तो इस वीडियो सीरीज को जरूर देखें। सो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर के साथ। सो ये चैप्टर हम शुरू करेंगे विद डेल्टन्स एटॉमिक थियोरी, बिकॉज डेल्टन वाज द फर्स्ट जिसने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट ही स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रूफ। सो एंड दिस थियोरी प्रपोज्ड बाय डेल्टन इज कॉल्ड एज डेल्टन्स एटॉमिक थियोरी। और ये थियोरी आपको सम बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में इजीली आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पे उसके पॉइंट्स जो लिस्ट डाउन ऑलरेडी किए हुए हैं। आफ्टर डेल्टन्स एटॉमिक थियोरी इट वाज वेरी क्लियर कि हमारा कोई भी अगर एक मैटर हम लेते हैं विच इज़ अ बल्क क्वांटिटी, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग दैट मैटर इनटू स्मॉलर पार्टिकल। तो उसमें जो हमको सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा उसको हम कहते हैं एटम। एटम मीन्स नॉन ब्रेकेबल और इट इज नॉन डिविजिबल। सो दिस वाज द थियोरी विच वाज प्रपोज्ड बाय डेल्टन इन 1808। और इसके बाद काफ़ी टाइम तक दिस थियोरी वाज एक्सेप्टेड, बट इसके बाद में देर आर मेनी साइंटिस्ट विच वर कंटिन्यूसली डूइंग देयर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड मेनी अदर थिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एटम। तो ये हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर विद सम एक्सपेरिमेंट्स, और उसके बाद में हम देखेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट की वजह से देर आर मेनी चैलेंजेस विच वर इन फ्रंट ऑफ दीज साइंटिस्ट। जैसे कि चैलेंजेस द फर्स्ट कि अगर कोई भी हमारा एक एटम है, सो इफ इट इज गिविंग यू सब एटॉमिक पार्टिकल, हाउ is the atom stable with respect to subatomic particle? सबसे पहला चैलेंज आएगा to explain the stability of atom. Now the second challenge is कि how do we compare the chemical and the physical property of different elements? So this is the second challenge. And the third challenge is how we are able to form a different type of a molecule by combining. So the fourth challenge is how atoms emit radiation and what are the characteristics of this radiation, electromagnetic spectrum. So these are the challenges which were in front of those scientists who discovered the subatomic particles. So हम शुरू करते हैं with our first experiment, that was the cathode ray tube experiment, which started this thing that हमारा atom को further we can divide it and we can get subatomic particle. Now let's first understand कि subatomic particle का understanding कहाँ से शुरू हुआ था. It was seen that there are many substances, for example glass or ebonite, when they are rubbed on some surfaces, और उसको अगर हम कभी पास में लेके जाएंगे so it will get some charge. So ये सारे substances में when we are rubbing it or when we are moving, then we are moving it to some other substances, how it is getting charged. So this was not able to explain by Dalton's atomic theory. तो ये सारे ऐसे बहुत सारे events हैं which made scientists curious about how this substances or how this matter are behaving in this manner after we know that atom का understanding हमको वहाँ तक already था. So this led to the discovery of many subatomic particles in 20th century. But हम इस chapter में we will study only about the two major subatomic particle, which is one is electron and second is proton. हम ये दो subatomic particle के बारे में we will study. Now let's start with the first experiment, which is cathode ray tube experiment, and it was done by J.J. Thomson. So J.J. Thomson का ये experiment, that is cathode ray tube experiment, is based on Faraday's concept which he was doing for the electrolytes. So cathode ray tube experiment, or it is also called as discharge ray tube experiment, and many other names are given, like we will stick to this name. अब cathode ray tube experiment में है क्या? Let's first look at the setup. तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले we have a glass tube, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, जिसके अंदर we have two electrode, जो हम देख सकते हैं. One is called as cathode, which is actually on the left hand side, or we can say on the negative terminal, and other we have as the anode, which is the positive electrode. Now these two electrodes are externally connected to a very high voltage, which is approximately taken as 10,000 volt. So this is the voltage of a very high value. इसके बाद में you can see here there is a vacuum pump here on the top side of the glass tube, where it is just present in order to maintain the pressure of the gases which we see in this glass tube. So अब ये experiment start करने के पहले ये glass tube के अंदर हम कोई भी type के gases ले सकते हैं. For example, let's take here hydrogen gas, and let's say all the hydrogen gas are filled in this glass tube. ठीक है, so all these blue dot lines are dots are representing H2 molecule. Now as soon as, let's see the start of experiment,
as soon as a very high voltage of approximately 10,000 volt ये जैसे ही हम शुरू करेंगे, so the current will start flowing from the negative part towards the anode, towards the cathode. और जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं, like as soon as the electron start moving towards the cathode, it will experience a very high negative charge. और ये चार्ज ये अपने नेबरिंग गैसेस मॉलिक्यूल को जो भी प्रेजेंट होंगे उनको बहुत ही हाई स्पीड में हिट करेगा, और इसकी वजह से ये होगा कि लेट्स से इफ वी से कि हमारा एक एटम है एंड इफ इट हैज सम नेगेटिव चार्ज, ये हमारा एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ पर जैसे ही एक वेरी हाई स्पीड में कैथोड की साइड से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हिट करेगा, सो वी नो दैट सेम चार्जेस विल रिपेल. तो इसीलिए कैथोड का नेगेटिव चार्ज और इस एटम के अंदर जो ऑलरेडी एक नेगेटिव स्मॉल चार्जेस प्रेजेंट, सो दीज टू विल रिपेल ईच अदर, एंड सिंस द कैथोड चार्ज इज वेरी हाई इन स्पीड ऑल्सो, सो इट विल just remove this negative charge out of the atom, and this will lead to the formation of the atom. Let's say this is having a negative charge. तो इस तरीके से एक atom के अंदर से we can remove the negative charge by applying a very high strength of potential difference from the cathode side. और जैसे ये gas molecule को hit करेगा तो उनमें से all the negative charges will be removed out. अब जैसे ये नेगेटिव चार्जेस एटम में से रिमूव हो रहा है तो डेफिनेटली ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, एंड ये जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे ये सारे के सारे एनोड पे जाकर के कलेक्ट हो जाएंगे. नाउ टू इंडिकेट द प्रेजेंस कि हाँ ये सारे जो नेगेटिव चार्जेस एटम में से निकल रहे हैं वो एनोड की तरफ मूव हो रहे हैं, सो वी अप्लाइड अ फ्लोरेसेंट मटेरियल टुवर्ड्स द एनोड, टुवर्ड्स एंड ऑफ एनोड. At the end of anode in this side, on this end there is fluorescent material is applied, and this is made of zinc sulfide, ZnS, which is a fluorescent material which is used in order to indicate that there is presence of some charge particle, because जैसे ही कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल हिट करेगा विथ हैविंग सम मास, जैसे वो हिट करेगा जिंक सल्फाइड को, इट विल क्रिएट अ स्पार्क, और जैसे वो स्पार्क आएगा सो वी विल कम टू नो कि हाँ इसके अंदर inside an atom we are having some negative charges. So this was the experiment which was done by Thomson, and he gave the proof that yes, atoms do have some negative charges inside them which has charge also and which has small mass also, and this led to the discovery of first subatomic particle which is called as electron. Now let's see what are the observation which is made from the Thomson's experiment. So first observation, all the negative charges were started moving towards the anode, that is towards the right hand side. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं all negative charges, and let's say here it is electron because Thomson gave it name as electron because it was again based on the concept of Faraday. So let's say all electron from atom start moving towards. Second is the nature of the gas does not have any effect with the strength of the electron move. That is, this experiment is independent of the nature of gas. आप कोई भी gas लो, you will get the same observation. So here we can say that nature of electron is independent of gas in experiment. Okay, यहाँ लिख सकते हैं in experiment. ठीक है. And the third point is that these negative charge particles were deflected in electric and magnetic field. So here we can say the cathode ray, let's say negative electron deflected in magnetic field and electric field. So इलेक्ट्रॉन और द कैथोड रे भी इसको हम कहते हैं बिकॉज कैथोड रे इज नथिंग बट द रे ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली. सो कैथोड रे डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस वाज द थर्ड ऑब्जर्वेशन. देन द फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज and fourth point is that it is independent of the nature of electrode. So, cathode ray is independent of nature of electron.
So these are the 4 important observations which was made by Thomson after his cathode ray tube experiment. So with this we got our first subatomic particle which is called as electron. Then later on Thomson found that, here we can say that J.J. Thomson found first, Thomson found that the charge and the charge by mass ratio of this electron, it was coming as 1.78 into 10 raised to 11 coulomb per kg. Okay, so this was the value which was observed by Thomson, and later on we will see that how we can get the value of charge and how we can get the value of mass of this electron. So जैसे ही J.J. Thomson ने अपने experiments ये proof कर दिया था that atoms are made up of some subatomic particle, और उसको उन्होंने proof किया that the first subatomic particle was electron which is negatively charged particle. और इस इलेक्ट्रॉन के लिए थॉमसन ने he had given E by m value, that is charge by mass ratio, which is nothing but you can see on the screen 1.78 into 10 raised to 11 coulomb per kg. जैसे ही J.J. Thomson ने E by m का वैल्यू दे दिया था हमें, so at that time it was the next step was to find the value of charge on electron and the mass of this negatively charged particle, and this was done with the help of Millikan's oil drop experiment. उनका बहुत ही एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था that it took a container in which there were certain openings on the top of the container, और उनमें से he started dropping the oils, and as soon as the oil were coming inside the container, the container was continuously supplied with X-ray. The X-ray की वजह से there were many negatively charged particles sticking to the drop of the oil, और जैसे ही वो oil नीचे आ जाता था, so Millikan was studying the charge on this particular oil droplet. So ये ऐसे multiple oil droplet के लिए, let's say this is the top part of the oil container, फिर यहाँ से जैसे एक ऐसा मल्टीपल ऑयल ड्रॉपलेट्स वर कमिंग, और इन सब ऑयल ड्रॉपलेट का सेपरेटली हुआ स्टडिंग दी चार्ज, लाइक एक पर्टिकुलर ऑयल ड्रॉप में कितना चार्ज है, दूसरे में कितना है, एंड इट वाज फाउंड दैट ऑल द ऑयल ड्रॉपलेट्स वर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम वैल्यू. all the oil droplet were having integral multiple of a value which is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So ये value से we were able to get the charge on negatively charged particle, which is nothing but electron. So let's see the value was obtained for the charge of electron. By Thomson we got the first value as E by m is equal to 1.76 to 11 coulomb per kg. By Millikan it was found that the charge Q is equal to E. The charge was found as 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Now definitely by using 1 and 2, okay, by using these two equations, ME can be calculated, that is the mass of electron. It can be calculated as E divided by E by NE, and in this manner if you put these values, so this will give you like 1.6 into 10 raised to minus 19 divided by 1.76 into 10 raised to 11, and this is coulomb per kg, so this will give you 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. So this is the value of mass of electron. So with this we had come to know कि हमारे एक एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मास is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, and the charge on this particle is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So ये तीनों जैसे हमको ऑब्जर्वेशन मिल गए थे. So after this we will study about the atomic models, जो कि हम यहाँ पर 4 एटॉमिक मॉडल्स देखने वाले हैं, which is first is Thomson's atomic model, second is Rutherford's atomic model, third Bohr's atomic model, and fourth is quantum mechanical model, which is accepted till now. और ये चारों ही एटॉमिक मॉडल में जो भी नेक्स्ट वाले होंगे, it will be better than the previous one. So in this manner we will see to it throughout the chapter. So thank you for watching this video till the end. If you have find this video useful, then do like this video. अगर आपने केमचैम के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए. If you have any comment for us, suggestion for us, then do mention it in the comment box below. If you are watching this video on Facebook, then like this video, share with at least 2 of your friends जिनको ये वीडियो इस तरह की पसंद है. Till then, see you in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.